ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब आपको सीधे लेके चलते हैं उज्जैन, जहां आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हैं। A period of 10 days. A lot of good science has come out. More than 50 scientific publications in high impact journals has come out, including talking about how the temperature distribution takes place in the top 10 centimeter. Now we know that temperature difference between the top layer and 10 centimeter down is more than 50 Kelvin. 50 Kelvin. You can imagine 10 centimeter इतना होता है, इसके अंदर 50 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन का टेम्परेचर डिफरेंस पाया गया है. We also came to know about the seismic activity. Whenever rover movement was there, we captured it. We know from Ramba LP observations that the plasma densities is or the order of few hundred particles per cc, which is also very new information, the first in the time. And using APX as instrument, which was developed in PRL, we came to know about the various elements which is present on lunar surface, including sodium, magnesium, aluminum, silicon, calcium, potassium, titan, manganese, and things like that. But we also found a little bit higher magnesium, which suggests that there has to be material which has come out from somewhere at this landing site. And then we propose that it has come out from the South Polaskian Basin. And because of this new conjecture, it came in the Nature paper. But then we corroborated this with more observations of volatile, and we found higher abundance of sulfur and lower abundance of sodium and potassium, which in turn suggests that yes, the hypothesis which we gave in the Nature paper is correct. What next? What next? India is now talking about the lunar sample return mission in Chandrayaan 4 mission, which is going to be much more complex and complicated than Chandrayaan 1, 2, and 3, because we not only have to land, but we have to push back the sample in the orbit around the moon. From the moon's orbit, it has come to Earth's orbit and then land onto the Earth's surface. So there will be a lot of dockings, and that's why we are doing docking experiments. Last year beginning, we had done space docking by combining two spacecraft, joining together and taking them out in Earth's orbit when they are moving at a speed of about 26,000 kilometers per hour. So this is going to be a very complex mission. In addition to this, we are talking about Chandrayaan 5, which is going into the polar regions, which is called LUPEX. It is a ISRO-JAXA mission or India-Japan collaboration. But we are going right at the southern polar regions and then landing at the site, going into permanently shadowed regions. That means they never see the sunlight. See what is present there. So rover is there and lander is there. Lander is coming from India. Rover and the launcher will be coming from the Japan. This is also a very complex mission because you have to land at a location where you will have sunlight continuously for 6 months. Batteries will be charging both the rover and the lander over here. Rover will go inside and come out, go into next one and come out. So it is a lifetime of 3 months. But we expect that it may last still longer than that. And this one is the one which will give you first information what is present in the deep freezes, which you call as permanently shadowed regions. We are also talking about Venus orbiter mission, which is a first Indian mission to Venus, where we are trying to orbit around the moon, but now we are also planning to have a probe which will go through the atmosphere of the moon, to the Venus, and probe its atmosphere. And this is going to be a very important mission from the country because for the first time we are going to explore the Venus. Venus has not been explored much by any other country other than a couple of missions which has gone like Magellan, Venus Express, and things like that. We are also talking about Mars lander mission because Mars orbiter we have already done in 2013 itself or 2014 and lasted for 8 years. Now we want to land straight away onto the moon surface, Mars surface, and then move like what we have done using the Pragyan rover on the moon. And this is also going to be a very important mission because it is for the first time that India will be landing on a planet which has an atmosphere. This is the future track. If Deepu allows us to talk a 1 minute, over time I know, but 1 minute to tell you what is next. We are talking about Chandrayaan 6, Chandrayaan 7, Chandrayaan 8, and then crewed mission. Finally, Indian Gaganyatri landing onto the moon by 2040. So this is the mission of the country. Pradhan Mantri ji has already given us this mission that Indian astronauts should land onto the lunar surface by 2040. And ISRO is continuously working on this.
And that's why you are seeing there has to be a series of missions before even human landing takes place on the moon. Once we have done that, we are talking about settlement on the moon. We are not talking about just exploring the moon, because we have to see whether we can use moon as a base for future exploration. And therefore, we are talking about the Bharatiya Chandra Nivas, that means human settlement or Indian settlement or Indian colony over the lunar surface. So this is a very long-term visions which is achievable in the next 2 decades or 3 decades or so, but we have to start working from now. If we talk about Chandrayaan-1 in 2008, the work started in 96-97 itself. It takes 10 to 15 years to actually realize this kind of complex missions. So the future is all very bright for youngsters who are sitting there, and all the data which comes from this kind of missions is available to public, to scientists within the country and outside the country to do the exploration. Thank you so much. On behalf of the audience and the esteemed guests here, I would like to thank Professor Anil Bharadwaj for talking to us about the exciting missions that ISRO has achieved until recently, and also wish good luck to ISRO for the future Chandrayaan, Venus and Mars missions. ISRO is making us very proud, and we are always with you. Thank you. Thank you. Thank you. On behalf of the scientific community of the nation, राष्ट्र का वैज्ञानिक और एस्ट्रोनॉमर्स का ओर से मैं चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव को स्वागत देता हूं हमारे बीच में। नहीं, मैं एक्चुअली इस ऑब्जर्वेटरी के बारे में पढ़ रहा था और मेरे को ये पता चला कि आप जब एमएलए थे तब से ही इस ऑब्जर्वेटरी को प्लानिंग आपने सपोर्ट किया है, प्लानिंग किया है। दिस इज वंडरफुल। I mean, even before he was the chief minister, he has been working for astronomy in this part of the country, and I hope that the astronomy and scientific community of the nation will get behind Madhya Pradesh and Ujjain when they host the Mahakal and showcase Ujjain as the center of astronomy in the country. So welcome again. Moving forward, we have been talking about स्पेस और हमारे आबहवा के बीच में जो लेयर है आयोनोस्फीयर, अपर एटमॉस्फेयर, वो स्पेस का जो इन्फ्लुएंस होता है हमारे पृथ्वी के ऊपर उसको इन्फ्लुएंस करता है। उस लेयर के ऊपर काम करना भी वेरी इंपॉर्टेंट है स्पेस साइंस के लिए। उसका एक एक्सपर्ट हमारे बीच में है डॉक्टर तरुण पंत। ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ स्पेस फिजिक्स लैबोरेटरी ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर फ्रॉम तिरुवनंतपुरम। I welcome him to the stage now to speak about our favorite planet, Earth. पृथ्वी के बारे में बात करने के लिए हमारे आबहवा, हमारे क्लाइमेट स्पेस से कैसे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं उसके बारे में बात करने के लिए। सर तरुण, प्लीज टेक ओवर। Thank you, Deepu. So I thought, I'll bring you a little closer to Earth. We started with the sun, and then we talked about the mission, ISRO's mission. And now I thought I'll bring you closer, as Deepu said, to Earth's upper atmosphere, and what is happening in the near-Earth environment. So I thought the topic that would be very relevant for that is the research, what is happening today, the sustainability of this region, whether we can continue in terms of the sustainability, we can talk about it, and what are the challenges that we face. So I hope that by the end of this talk, I'll be able to give you an impression what is happening in this particular area. Globally, when you talk about a nation, how it is faring in the international arena, the one metric that is used is the consumption of power, right? The per capita consumption power of that nation. And if you look at India in recent years, even though India comes at a 12th or 13th position in the globe, but then the growth in the power consumption in India in recent years had been more than about 52%. And that sort of tells us that what sort of energy requirements we have on the ground. That is the need for the... Okay, all right, sir. Yes.
days. More than 50
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के बढ़ते सामर्थ्य का उद्घोष है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से संवरते प्रदेश का स्वर्णिम जेवर है। प्रतिवर्ष 1 करोड़ 20 लाख यात्री क्षमता वाले इस एयरपोर्ट के माध्यम से भविष्य में 7 करोड़ से अधिक यात्री लाभ ले सकेंगे। ये वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट 9 सिक्योरिटी चेक लेन, 48 चेक इन काउंटर, 20 सेल्फ बैगेज ड्रॉप जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। उत्तर भारत का कार्गो गेटवे होने के साथ साथ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एनसीआर में एक और अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश द्वार के अनुरूप है, जो उद्योगों को गति देगा, निवेश को प्रगति देगा और उत्तर प्रदेश को समृद्धि देगा। न्याय, वीरता और सुशासन के पर्याय सबसे लोकप्रिय नायक हैं सम्राट विक्रमादित्य। भारत की युवा पीढ़ी को ऐसे लोक कल्याणकारी सम्राट के व्यक्तित्व और कृतित्व से परिचित कराने के उद्देश्य के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से बाबा विश्वनाथ की पावन नगरी वाराणसी में 3 से 5 अप्रैल 2026 को मध्य प्रदेश शासन द्वारा भारत के स्वाभिमान सूर्य विक्रमादित्य पर केंद्रित महानाट्य का मंचन करवाया जा रहा है। आइए इन अद्भुत पलों के साक्षी बने। इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों का सुखद परिणाम है विगत 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश का नव निर्माण। आज प्रदेश में सशक्त मातृशक्ति, समृद्ध अन्नदाता, सपनों को साकार कर रहे युवा निखरते प्रदेश का प्रतीक बन गए हैं। उद्योग एवं अवसंरचना का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। गरीबों एवं वंचितों को आधुनिक उपचार से लेकर आवास प्रदान किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास के लिए मैंने फॉर्म भरा तो उसमें मेरा नाम आ गया लॉटरी में। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रदेश के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पुनर्जागरण की आज वैश्विक पहचान है। सुदृढ़ कानून व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश में भय मुक्त परिवेश है। 15 लाख करोड़ से अधिक के निवेश धरातल पर उतारे जा रहे हैं। समृद्धि का नव संदेश, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। श्री अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण और फिर शिखर पर सनातन की धर्म ध्वजा। 500 वर्षों की प्रतीक्षा पूर्ण हुई और त्रेता युगीन अयोध्या नगरी जीवंत हो गई। वर्ष 2025 में 29 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अयोध्या धाम पहुंचे। पर्यटन बढ़ा तो उद्योग व्यापार को गति मिली और रोजगार के हजारों अवसर सृजित हुए। विकास का कार्य हुआ और जगह जगह से लेकर के पूरी अयोध्या राममय है। जैसे त्रेता द्वापर में सस्ती थी, उसी तरह योगी जी ने अयोध्या के मठ मंदिर का सुंदरीकरण कराया। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रयास फलीभूत हो रहे हैं। राम नवमी पर अद्वितीय सूर्य तिलक की दीप्ति, नए उत्तर प्रदेश का संदेश संपूर्ण विश्व तक पहुंच रहा है।
न्याय, वीरता और सुशासन के पर्याय सबसे लोकप्रिय नायक हैं सम्राट विक्रमादित्य। भारत की युवा पीढ़ी को ऐसे लोक कल्याणकारी सम्राट के व्यक्तित्व और कृतित्व से परिचित कराने के उद्देश्य के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से बाबा विश्वनाथ की पावन नगरी वाराणसी में 3 से 5 अप्रैल 2026 को मध्य प्रदेश शासन द्वारा भारत के स्वाभिमान सूर्य विक्रमादित्य पर केंद्रित महानाट्य का मंचन करवाया जा रहा है। आइए इन अद्भुत पलों के साक्षी बने। 3, 2, 1